गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज राजू। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज के बारे में स्टडी किया था। आज के वीडियो में हम लोग कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली रूल्स that apply to table columns to control the data that can go into a table. It means कंस्ट्रेंट्स एक तरह के रूल होते हैं जो हम किसी भी कॉलम में जो डाटा को एंट्री करते हैं, जो डाटा को फिल करते हैं, उसको कंट्रोल करती है, उसको मॉनिटर करती है। सो हम लोग समझ सकते हैं ऐसे कि कंस्ट्रेंट इज अ टाइप ऑफ रूल बाय विच वी कैन चेक और वी कैन मॉनिटर द डाटा गोइंग इनटू अ टेबल. So what is the benefits of checking constraints? So it ensures accuracy, validity and integrity of the table, integrity inside the table. So it checks that the data is accurate or not. It should not contain any redundancy. It checks that the data should be valid and the data should be integrable. So this is all about the constraints. Now we study about the different types of constraints in SQL. Some of them are unique, not null, check, default, primary key constraint, foreign key constraint. Let's study first from primary key constraint. So before studying the primary key constraint, we should know about the two constraints, not null and unique. So let's start from not null and unique. So unique constraint, this is the unique constraint that ensures a column, ensures all values in a column should be unique. All values in a column are different. It means all the values should be unique. So what was the syntax? What will be the syntax for the unique constraint? So we can write it as create table student phone number int unique. So our phone number, we all know that the phone number of every person is different from person to person. So phone number should be unique. It cannot be same. It should be different for the different persons. So we specify in the table student that phone number, its data type, and by writing unique we define it as phone number should be different. So this is all about unique. Next constraint is not null constraint. Not null constraints ensures a column cannot have null values. It means column कोई भी null value contain नहीं करेगा, वो इस चीज को चेक करता है। तो ये ensures करता है कि all values, ensures a column cannot have any null values, can't have null values. So what was the example? So let's understand by an example. Create table student, roll number int and name varchar 50 not null. So हम लोग चाहते हैं कि एक टेबल हो जहाँ पर जो हमारा नाम हो वो डाटा हमेशा अवेलेबल हो। अगर नाम अवेलेबल नहीं हो तो उसके रिगार्डिंग कोई वैल्यू स्टोर ही ना हो। तो मतलब कि हम लोग चाहते हैं कि नाम हमेशा उसमें कुछ ना कुछ डाटा भरा हुआ ही रहे, तो इसलिए हम लोग उसको स्पेसिफाई कर देते हैं बाय राइटिंग द कंस्ट्रेंट नॉट नल. इट मीन्स नेम इज द मैंडेटरी सेक्शन टू फिल द डाटा. So this is all about the not null. Now we can understand the primary key constraint easily. So what is the primary key constraint? The primary key constraint defines that it should contain both the constraints property of not null and unique, and in any table only one primary key is available or can sustain. It uniquely identifies each record and it cannot be null and it should be unique. So let's understand by an example. यहाँ पर हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया है कस्टमर. अब उसमें हम लोग प्राइमरी की को डिफाइन करेंगे. तो लेट्स दिस इज द आईडी कॉलम, वी स्पेसिफाई इट्स डाटा टाइप एंड बाय राइटिंग द प्राइमरी की we define it as the primary key constraint. It means id should be unique and not null value. It contains always unique value and it should not contain any null value.
So this is the example of primary key constraint. Like other data should be filled, branch ID int, first name care, last name care, DOB date, gender care. In any table, only one primary key exists. So it is written here that in any table, only one primary key is available. The next constraint is foreign key constraint. Foreign key refers primary key of the other table. It means it is related to the other table. Each relation can having any number of foreign key. So कोई भी आपका जो टेबल है उसमें जो फॉरेन की होता है वो एक्चुअली में दूसरे टेबल का प्राइमरी की को रेफर करता है. इट मीन्स दो टेबल्स हैं ए एंड बी. तो बी में अगर आपका वो फॉरेन की है तो ए में वही फॉरेन की प्राइमरी की के जैसा एक्ट करता है. तो बी वाला जो टेबल है वो ए को रेफर कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं बी इज द फॉरेन की एंड ए इज द प्राइमरी की. इट मीन्स बी कंटेन्स द फॉरेन की एंड ए कंटेन्स द प्राइमरी की एंड बी refers the column of A, which is a primary key. And in any relation, any table, foreign key can have any number of. It means any table contains any number of foreign key. So let's understand by an example. So here we create a table name as order, where ID we define ID as a primary key, and delivery date, order place date as date, and foreign key we define foreign key as a customer ID. References customer and ID. So let's understand. इस ऑर्डर में हम लोग इस टेबल जो इसमें हम लोग ने एक ऑर्डर नाम का टेबल क्रिएट किया है जिसमें जो आईडी है वो हमारा प्राइमरी की है. डिलीवरी डेट एक और कॉलम है, ऑर्डर प्लेस डेट एक और कॉलम है. अब इसमें हम लोग ने डिफाइन किया है कि एक फॉरेन की को डिफाइन किया. फॉरेन की को डिफाइन किया हम लोगों ने बाय राइटिंग द कीवर्ड फॉरेन की एंड उसका नाम दिया हम लोगों ने कस्टमर आईडी. और हम लोगों ने इसको रेफरेंस किससे किया? हम लोगों ने इससे रेफरेंस किया जैसे कि हमने लोगों ने यहाँ पे देखा था इस एग्जांपल में कि बी रेफरेंस कर रहा था ए को. तो वैसे ही ये जो फॉरेन की कस्टमर आईडी है वो रेफरेंस करता है कस्टमर को, और कस्टमर के कौन से कॉलम को? आईडी को. तो आईडी इज अ कॉलम ऑफ कस्टमर टेबल बट इट इज यूज्ड इन अ ऑर्डर टेबल बाय द एज अ फॉरेन की. So here you can see that in a customer table ID is a primary key, but we are creating a new table order and taking customer ID as a foreign key. That's why it is known as the foreign key constraint. It means we refers a primary key of another table in another table. It means in the easy language we can say that foreign key refers primary key of other table. So we understand the unique and not null. Let's understand simply an example of unique. By writing the unique keyword we can define it as it contains all different values and not same value. So here is the example. create table customer. हम लोगों ने एक टेबल कस्टमर नाम से क्रिएट किया है जिसमें हम लोगों ने नेम लिया है और नेम को हम लोग यूनिक वैल्यू किया है, यानी कि हम लोग का जो नेम हो वो कभी भी सेम नहीं डाटा स्टोर करेगा, हमेशा डिफरेंट डाटा स्टोर करेगा. Now we study about the check constraint. चेक कंस्ट्रेंट बेसिकली चेक कंस्ट्रेंट यूज होता है आपका कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट को चेक करने के लिए. इट मीन्स ये कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है. चेक कंस्ट्रेंट आपके जो भी टेबल में जो कंडीशन दिया जाता है उसको चेक करने में यूज किया जाता है. जैसे कि ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने एक अकाउंट नाम का टेबल किया है, एक अकाउंट नंबर का एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें हम लोगों ने कॉन्स्टेंट डाला है अकाउंट बैलेंस चेक, वेयर हम लोगों ने चेक कर रहे हैं कि बैलेंस ग्रेटर देन 1000 है कि नहीं. मतलब कि हम लोग वही बैलेंस को इंटरटेन करेंगे जो कि 1000 से ग्रेटर होगा. सो फॉर यूजिंग द कंडीशन वी यूज द चेक कीवर्ड फॉर चेक कंस्ट्रेंट. इट इंश्योर्स values meet a specific condition, and the last constraint is the default constraint. So what is the default constraint? Default constraint set a default value if no value is provided. So it set a default value if no value is provided. अगर हम लोग किसी भी कॉलम या रो में कोई भी डाटा फिल नहीं करते हैं, उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो हम लोग एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें असाइन कर देते हैं बाय राइटिंग द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, जिससे अगर हम लोग उसमें कोई वैल्यू डालना भूल जाते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें जाकर स्टोर हो जाता है. जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि एक अकाउंट नाम का हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं और बैलेंस को हम लोग सेट कर देते हैं नॉट नल और डिफ़ॉल्ट 0. अगर पहला चीज़ तो हम लोग चेक करते हैं कि वो बैलेंस नल नहीं होना चाहिए,
और अगर ऐसा होता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 डाल दें, मतलब कि नॉट नल स्टोर करें। और फिर अगर नॉट नल मतलब नल वैल्यू आता है तो डिफ़ॉल्ट में 0 डाल दें। So this is all about the constraint in this chapter. In the next video, we will study about the other operations. You can download the notes from the description box. Thank you everyone. Please subscribe my channel for the tech related contents. Thank you.